Hello, everyone, and welcome to this episode of Fund Manager Fridays with 5paisa.com. I'm Deepika Asthana, your host for the evening. अब आप सभी को पता होगा या आपने सुना होगा कि प्लानिंग स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है. इट कैन हेल्प इम्प्रूव योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. इट कैन हेल्प मेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड ऑल्सो अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स. लेकिन सुनने और करने में बहुत फर्क होता है. एंड व्हाइल यू माइट हैव हर्ड अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली क्या होता है? एंड जैसे कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल है, आपका फाइनेंशियल प्लान भी यूनिक होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? सो टुडे टू डिस्कस the very basics of financial planning and also help you probably create a financial plan which is very uniquely customized to your requirements. We have Mr. Sunil Rohini Kisan, founder and director, SRK Group. Hi Sunil, welcome to the show. Good evening, Deepika. Good Thank you evening. so much for calling me. It's my pleasure to join you. And Okay. let's hope whatever little in 30 to 45 minutes, what we can capture here and give more inputs to our clients or potential clients and who wants to do their financial planning. Good Absolutely. evening. Good evening, all of you. Um, Financial planning word itself um, should create confusion in your mind. First thing is what is finance? Second thing is do you need planning for that? And these two basically are very different, and at the same time, you have to make sure that it is helping you. Uh, Finance could be your income, and finance could be somebody who doesn't have an income at all. But does that mean that the person who's earning and the person who's not earning does not require financial planning or require financial planning? So let's come to the point where someone comes to me and says, Sir, ki roj every kind of a month, I'm getting a salary. And at the end of the month, I don't have any money. So what do you expect me to do? How do you expect me to do my financial planning? And this is very typical. People will Correct. say कि पैसा ही नहीं बचता है तो कहाँ से हम financial Plan planning correct, planning. correct. Mhm. So I had a very this kind of a client who talked to me this way and he said कि इसका कोई मतलब नहीं बनता. So I asked him a simple question. Okay, in the beginning you have your salary coming into your account or income जो भी business करता होगा, consultancy करता हाँ. होगा, you have your income coming to your account. And now let's say that throughout the month, maybe your rent, maybe your EMI, maybe your electricity, maybe your kirana, maybe your petrol, maybe your some other charges which you have been paying throughout the month, right? Mhm. And at the month, you are saying that you don't have money for any investment. The Mhm. question comes, is your saving account or the bank account is absolutely empty, zero on 31st? 99% people told me, no sir, ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता है. तो हाँ. at the end of the month, 500 rupees, 1000 रुपया ही बाकी रह जाता है. And on the first, again the salary comes in. So my simple solution to this one, it means that 500 rupees or 1000 rupees, which was lying in your account till the first, and when the salary came in, or whatever your income is coming, that 500 rupees or 1000 rupees was there, which was extra than all your expenses. One can start his or her investment even with 500 rupees. My point here is that, and you also must be knowing, and people are here, they also know it, that one can actually start investing in mutual fund with just 100 rupees. Correct. Why go even for the 100 rupees? There are so many stocks available which are less than 10 rupees, which are for 20 rupees, 30 rupees. So for investing or starting the investment, you don't need all these excuses that we don't have the money. Now, this is very typically applicable to those people who think that financial planning is required only for the people who are earning big amount. No.
one can actually start with 500 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, or whatever the amount is available to them. Second thing is, one should know that you should not be taking the tension of the investment, because the moment you start thinking, oh my god, मेरा SIP का पैसा जाना है, मेरा मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे किसी फाइनेंशियल प्लानर ने या किसी दोस्त ने ये बताया है कि देयर आर सो कॉल्ड गोल्स आर देयर, द रिटायरमेंट प्लानिंग तो करनी पड़ेगी. अब तक तुमने कुछ नहीं किया, बच्चों के शादी के लिए तुमने कुछ नहीं किया, राइट? आई मीन इन द फैमिली देयर इज अ प्रेशर कम्स कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए इतना पैसा चाहिए होता है, शादी के लिए 10-15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, कुछ भी. सो दिस काइंड ऑफ सोशल प्रेशर विच इज देयर, this actually create the tension, and once start taking that tension and go with the investment, तो उसको इनकम ही 20,000 होगी या 50,000 होगी या 1 लाख होगी, 5 लाख होगी. See, there is a difference between the person who's earning 5 lakh and who's earning maybe 20,000 per month. Correct. But the social pressure is same. क्योंकि मतलब जो बंदा 20,000 महीना कमा रहा है, probably his daughter or his son's marriage will take place what is it, 5 to 10 lakh rupees maximum. जो बंदा ही 5 लाख की SIP कर रहा है, his daughter's marriage would take probably in a crore. Correct. So it is absolutely different thing, but main thing what one need to understand is the start your investment with whatever amount you can. So there is no pressure at all. Start. So once you start your investment, you start seeing it कि वो ग्रोथ हो रहा है. जैसी ग्रोथ होती है उसमें आपको पता चल जाता है कि दिस इज समथिंग बेटर दैन. नाउ you don't need any financial planning to buy a gold. हम तो जाके खरीदते ही हैं for whatever reason, right? You don't need any planning from the FD point of view. हमें क्या सिखाया गया है कि भाई पैसा है FD जाके करो. So why you need a financial planning basically from the equity point of view. Now when I come to equity, it means whenever you're investing your money for long term goals, which could be your own retirement. Let's say somebody is 40, 45 and usually अगर कोई 60, 65 में रिटायर हो रहा है, so let's say 15 to 20 years का अगर आपके पास गैप है, तो आपके रिटायरमेंट की किटी के लिए, now when I say रिटायरमेंट की किटी, it means a particular amount should be there which will start giving you monthly income even after you retire. तो बनाने के लिए अगर आपको 10-15 साल मिल रहे हैं, so what you should be doing is putting somewhere where it will give you the returns more than inflation. मतलब महंगाई, अगर महंगाई आज की तारीख में 8 to 10% के बीच में है, and which is per year, right? So how can your investment return less than that will take care of your retirement kitty? क्योंकि वो तो आपकी महंगाई पूरा का पूरा आपका रिटर्न खाए जा रही है. As on today, in case we are talking about 2022, unless a market started in 1979, to be very precise, it's 1st April 1979 where equity market started, right? So almost we are talking about 40 years plus. In this past 40 years, आप कोई भी 5 साल उठा लो, 2001 से 2005, 2002, 2006, 2015 से 2020, कोई भी उठा लो, on an average, CAGR of equity is minimum 15%. So I'm not talking about more than 15% in any equity. So आप उसमें लगाइए पैसा, म्यूचुअल फंड में लगाइए या शेयर्स में लगाइए, and hold on for 10-15 years. If you're not taking out money, you will definitely achieve your retirement kitty. Okay. Second question comes your child's marriage. Again is one of your goal which need financial planning, so you can put it in that. Excuse me. Let's say again you have आपके बच्चे की पढ़ाई. Now usually these 3-4 only the goals coming to somebody's mind from the financial planning point of view. So let's say जैसा our tagline says that every individual need different planning. Yes. Correct. Let's take an example. Someone who's having salary of
40 to 50,000 ठीक है. पर मंथ. सो 40 to 50,000 अगर किसी की है, इसका मतलब ये हो गया उसके 5 से 6 लाख रुपया उसके हाथ में आ रहा है टैक्स एकदम. वैक्स करने के बाद. सो आफ्टर दैट, इन केस समवन सेज कि इतने में तो पूरा का पूरा निकल जा रहा है पैसा मेरा. So my sincere request to that, do simple, the way I mentioned 2-3 points, do simple, and even if someone from that invest 10,000 rupees per month, okay, थोड़ा ऊपर नीचे भी चल जाएगा, that's not to worry, क्योंकि ऊपर नीचे बाद में होगा. So within a 20 years, सिंपल कैलकुलेशन ही बता रहा हूं मैं आपको, 15% से भी वो 1 crore 20 lakh हो जाता है. Wow. Okay. So in That's 20 doable. years, yes, in 20 years, you basically investing only 24 lakh because 10,000 rupees per month के हिसाब से 10 years का 12 Correct. lakh, दूसरे 10 years का 12 lakh. So you invest 24 lakhs and you will have 1.20 CR at the end of. अब ये मैंने I've taken it only by 15% क्योंकि अपना CAGR तो 40 साल का 40% है. Once you have that, maybe whatever your retirement का आपका गोल है, आपका बच्चे की शादी का गोल है, आपको बीच बीच में उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, आप उसमें से निकालते चाहिए. The second thing comes for somebody who's ready to invest 5 lakh rupees per month. Right? These are two different individuals. Correct. Now for that person, even his retirement kitty will be higher, he will require more higher. Correct. Now, Yeah. this type of category, when I do financial planning, I ask simple question, which I usually ask the other category also, but not much because they need one international holiday, 2 domestic holiday per year, and I need to make sure that including that in the financial planning. Fair Every enough. 5 year, the car need to be changed. So in my financial planning, I see to it that every 5 year I give them the money for their car change. I also see to it that their child education plan means someone says, I want to make my son pilot. पायलट का एजुकेशन या वो कोर्स के लिए कितना खर्चा आता है, which we can't even think where someone is just drawing 50,000 rupees. So when we do the financial planning, these two are absolutely different things. Now all this comes when someone is earning, right? So there are 3 stages in financial planning, as I was mentioning. First is पहले तो आपके पास पैसे हैं, उसके पहले that's called we pre-financial planning. इसका मतलब है whatever finance or income you're generating and you're creating fund to achieve all your goals. What if something happens to you? Okay. You know today by financial planning कि मुझे अपना रिटायरमेंट किटी के लिए 1 करोड़ चाहिए. Let's say it means you're thinking of you and your family, right? Your spouse or your son, daughter, whoever will be at that time. What if something happens to you? So your financial planning will go where because you were earning, you're supposed to get money, you're supposed to Correct. invest, and that investment is not going to happen now because you are no more. In this, the very important thing comes is that you should be having your life insurance plan. Okay. Now some people ignore this absolutely. In the financial planning ये कोई सोचता ही नहीं है. But it is something like when you are building a fort, you need to have a compound. It's like all the possible what can threshold your plan is by your simple life insurance plan. Second thing also comes in the financial planning is your health insurance. Because let's say you have generated money in 3-4 years by investing in different products, and एक बीमारी आ जाती है, आप हॉस्पिटल चले जाते हो. We all observe that in the corona time, and the money is gone. From where the money is going? Your money is going from your own investment. Correct. How do you protect your investment? First, having your life insurance plan, जिसे term plan बोलते हैं. Second is your health insurance. Make sure you have a good health insurance plan.
मतलब किसी भी अच्छी कंपनी से किसी भी को अच्छी, एंड इट इज नॉट कॉस्टली एट ऑल कंपेयर टू व्हाट डैमेज इट विल मेक टू योर इन्वेस्टमेंट एंड योर गोल्स. नाउ व्हेन आई से दिस, ये तो प्री प्लान हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया. नाउ third and very important part, which is ignored most of the people in while doing the financial plan, is that जो भी हम कर रहे हैं, let's say we have created 1 cr 2 cr 3 cr 5 cr 100 cr, right, in whatever 20 30 years time. But it is definitely gonna, after you, it is definitely gonna go to your whoever is your family member, और जो भी आपका बेटा होगा बेटी होगी, right? So you have to make sure that they are getting it easily without any hassles. And for that, what is the most important in financial planning, which I call it, that is a will writing. आपने अगर अपनी will नहीं लिखी है, whatever the assets are created by you, no matter how good financial planner was, no matter how best financial planning was done, it will not take much time that some wrong people who you don't want it to take the advantage will take the advantage. I'll give you a small example which we all know. LIC की पॉलिसी सबके पास है. Just because previously जिन लोगों ने LIC की पॉलिसीज निकाली है, या फॉर दैट मैटर एनी इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे डिड नॉट टेल देयर फैमिली मेंबर्स कि हमारे पास पॉलिसीज है. उनकी डेथ के बाद उनके कबर्ड से, उनके लॉकर से जब पॉलिसीज मिल जाती है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, समथिंग अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 75 lakh crore worth claims are pending and no one is gone to claim. Now what's the use of this kind of financial planning where you are not making sure that whoever is supposed to get the benefit is not getting the benefit? So in short, I kind of try to tell you what is the most important. Going in detail, I think if if time permits, next time or whatever, we can go in detail wise. But I think this was very important for people to know that financial planning is not only I'm mentioning to you about इसमें SIP शुरू करो, या SIP करनी चाहिए, या आपने शेयर्स में कितना डालना चाहिए, या 30-40% का एक होना चाहिए, 50% आपका एक्सपेंसेस होगा. दैट एवरीबडी नोज. गूगल में आप जाइए, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. What is important is try and understand why I'm doing, what can damage my plans, and how do I protect this from anybody. क्योंकि एक बार मामला कोर्ट में चला जाता है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते. So very important things here I try to mention here for you. एक, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड मेकिंग श्योर दैट इट इज गोइंग टू द राइट पर्सन आफ्टर यू should be having the, and believe me, this is all part of financial planning. अगर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, so then this is very important all to know. And as already mentioned, I have been handling more than 600 families where the financial planning is concerned, and it is been told to all these people. I work only on the references. It means when my clients are happy, they give my references to somebody. They have done I have done the good thing to their finance, and I have done exactly this way. So my simple suggestion to you is make sure your entire financial planning is based on this only. So that's great, Sunil. Actually, जो आपने अभी समझाया, and I just go back to the beginning because I think what you said in the beginning was very interesting. कि तो ये प्रॉब्लम बहुत सुनने में आती है कि भाई आप मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं प्लान क्या करूं, राइट? एंड लाइक यू सेड कि छोटे से 500 रुपीज के साथ भी वी कैन स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग. बट व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, एंड सुनील मे बी आप if you can touch upon a little bit on that, is so we discussed all of these various goals, right? You said retirement hai aur bachon ka education hai, but I believe at least a very important part of financial planning is also how you manage your entire portfolio. क्योंकि goals का क्या होता है, अलग अलग time horizons होता है.
आपका risk profile, as you know, through the ages. At 25, what your risk ability to take risk is different from what it is at 40 or 60. Similarly, the investments we discussed, equities, आपने debt के बारे में बात करा, SIP के बारे में हम लोग ने बात करा, तो हर investment का भी risk और return potential अलग होता है. So just, as before we wind up, if you could just walk us through how investors can actually build really good portfolios, which reflect their financial plan. Okay. Here I'll tell you very simple thing. In case you need money, let's say within a year, आपने मुझे बोला कि सुनील मेरे पास पैसे है and I'm ready to invest also, but the same money I'll require maybe a down payment of my new flat I'm planning to book. तो उसके लिए मुझे 3-4 लाख रुपए चाहिए, and which I'm planning to do within a year or let's say 2 years. Correct. Then that amount cannot go in 100% equity. Okay. It has to go in the debt or maximum to conservative hybrid, जहाँ पे not more than 30 to 25 to 30% amount equity में जाता है. Because your goal is very clear. Your goal is short term, right? It is gonna come like within a year or two also. Here, your 100% equity will not work. तो इफ यू नो फॉर श्योर कि अगर आपको पैसा कुछ महीनों में चाहिए, कुछ दिनों में चाहिए, या कुछ साल में, 1-2 साल में, सेकेंड मंत्रा आई विल टेल यू, इन केस योर रिक्वायरमेंट इज लेस देन 3 year, you should not be even thinking of the 100% equity. शेयर मार्केट तो दूर की बात है, डायरेक्ट शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं मैं. इवन 100% इक्विटी की म्यूचुअल फंड की भी बात नहीं कर रहा. Then you can think of debt fund. In debt mutual fund, you will also have short-term mutual fund. You have a very short-term mutual fund also. You have a 6 months point of view. You have a 1 year point of view. And then more than that, let's say you need money, let's say 10 days. Within 10 days, and you say कि मेरे पास एक 25 लाख आए हुए हैं and I want to put in for 10 days. Of course, there are liquid funds which you can invest and you will still earn better than your saving accounts. Amount is available within, most of the platform gives you, within 2 to 3 minutes it come back to your saving account. So one need to understand first is a time horizon for how much time the person is planning to invest. That's the reason when I took the example of खुद का retirement, which could be 15 to 20 years. बच्चे की शादी 15 to 20 years. बच्चा बड़ा होते जा रहा है, तो in between for schooling you might not need more than let's say 50 to 1 lakh rupees. But when he's 10th or when he's 12th or graduation kind of, then probably you require more chunk, deciding his life or career. Then probably you can think of that. But otherwise, yes, you need to think of this particular product. Also, you need to make sure wherever you investing are tax efficient. When I say that tax efficient, it means you need to understand कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा इसके ऊपर पैसा कितना कट होगा, how much tax will be deducted. Otherwise, what's the use if I say that, oh wow, you will be getting 30% return? You got 30% return, and what if you fall in the income tax category of 30% and you paying 30% again the tax on that? So you hardly got anything. You lost the time opportunity. So one need to understand whether your investment is a tax efficient, where you investing, what kind of past returns they have given. It is very important. Future returns, nobody knows. Believe me, nobody knows. But what is the past, how they have performed, any good. So take example, I'll give you. Let's say gold. Nowadays gold bars available, gold bonds ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. Gold on an average 40 years has not given more than 6% CAGR. तो ये सबको पता होना चाहिए. अब आप बोलोगे यार कभी कभी मैं अक्षय तृतीया को बेच देता हूं तब तो बड़ा मिल जाता. Yes, it means you becoming actually trader. आपने क्या किया, दिवाली के 1 महीना पहले खरीद लिया और दिवाली के लक्ष्मी पूजन को बेच दिया. You will get more than 10 to 15%. But in case we are talking about investing, जो we Indians are very fond of, gold लेते रहते, but CAGR is not more than 6%.
from year to year. Second thing comes is a real estate. घर खुद को रहना है, घर खुद को रहना है, then buy the lavish flat. All possible amenities, best of best facilities. Investment के लिए big no, because there is no liquidity at all. आपको आज 5 लाख की जरूरत है, आपने फ्लैट में इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया. कैन यू से कि मुझे सिर्फ बाथरूम बेचना है, 5 लाख चाहिए मुझे इसलिए? यू कांट. So you got to think what is the product you investing in, and then you make sure what are the returns you're gonna get, and then you see how it is gonna achieve your own goal. क्योंकि आपका गोल और आपके भाई का गोल या आपके दोस्त का गोल बिल्कुल अलग होगा. जी हाँ. So do not mix up. किसी ने कुछ बोला मुझे, अरे इसमें तो डालना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता. People like me are easily available, okay, who are certified, who will always guide you, and chances are there that you will only be benefiting from these services. So do not hesitate to go to somebody who has a proper knowledge and seek the knowledge and plan it out accordingly. This is what I can say from whatever the question is. That's very helpful, Sunil, because जो आपने अभी बोला है, हम लोग कितना देखते हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट में तो देखते ही हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस होल हैबिट ऑफ मिमिकिंग अदर पीपल्स प्लान और पोर्टफोलियो इज द इजी वे आउट. में भी समटाइम्स लगता है कि बहुत आसान है, वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा कर सकते हैं. लेकिन जैसे आपने बोला, एंड विच इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे ऑल्सो, कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्यों जरूरी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, आपका फाइनेंशियल प्लान, आपकी ज़रूरतें अलग हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और प्लान भी अलग होना चाहिए. एंड लाइक यू वेरी राइटली सेड कि सो ऑनेस्टली आजकल बहुत लोग ये डू इट योरसेल्फ अप्रोच भी अडॉप्ट करते हैं. आई डोंट नो हाउ गुड और बैड दैट इज, बट हाँ, जैसे आपको बीमारी है कुछ, यू नॉट वेल, यू गो टू अ डॉक्टर. सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग टू क्रिएट अ गुड फाइनेंशियल प्लान, a financial advisor is the person you should go to, क्योंकि he or she is got the expertise and the experience of advising people on their finances. So this has been very interesting. Like I said कि जो आपने शुरू करा कि छोटे से शुरू करो, plan करो, grow your money, understand what your goals are, and accordingly create a financial plan. So I think that is personally been very helpful. But I'm sure our viewers also have found this session very, very helpful. Just something that you would like to summarize our session with? Definitely. Do not hesitate to start your investment, no matter what age you are, no matter what gender you are, no matter how young or how old you are, no matter where you're working, what level you are working, no matter whether you're already rich or you are not rich at all. Start investing, because someone said it very correctly. पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करता है. So what it means, if you need money, you need money only. There is nothing else can come in place of money and work as a money. जितना भी पैसा आपके पास है उतना कम है, ध्यान में रखिए हमेशा ये बात. And once you start believing it, then only you will understand the value of money. I'll give you the last example, and I don't mind summarize here. Yes, please. I met one celebrity. Now just imagine who's in Bollywood from past donkey years. All right. Okay. Now we happen to meet through friends and friends and become client. You know the जो आपके client होते friends बन जाते हैं, friends with client बन जाते हैं, something like that. And I happened to meet, and we were discussing, and वही same topic आ गया, मुझे पैसे की क्या जरूरत है, why do I need financial planning, और इतना तो आता ही रहता है. So I said, you can do charity also. Believe me, the conversation just stop over there for a moment. He said, तुम
कभी सोचा ही नहीं था. सोचा ही नहीं था. हाँ. So probably your need और आपकी नीड का एक अपने एक डेफिनेशन बना के रखा है अपने दिमाग में कि मेरा 2 BHK है, 3 BHK है, मेरा तो घर हो गया, मेरी एक कार है, 2 कार है, अच्छी कार है, मेरे बैंक बैलेंस है, या मेरा इतना पोर्टफोलियो इक्विटी में इतना है. ये कभी भी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और you can be helpful to others through, there are so many different ways, and believe me, charity karna is also part of the financial planning. So do not think that this is not part of it. This is something, one can easily ignore. And as I told you, I meet absolutely two different end people, and whenever I meet, and there are so many people who say, "Ki, let's see what best we can do for the others." By me creating whatever profit, they give it to their charities. They already have their charities. तो इन्वेस्टमेंट करना एंड उसका प्रॉफिट सिर्फ अपने लिए ही होना चाहिए, नथिंग लाइक इट. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी गो स्टेज बाय स्टेज. तो पहले अपने लिए कमाओ, फिर अपने घर वालों के लिए कमाओ, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए कमाओ, एंड देन यू हैव होल वर्ल्ड टू डू इट. Excuse me, I'm sorry. Well, actually, on that note, I think we will wind up because it's such a high, what you said, ki, ek to I'll agree with you ki there's no such thing as too much money. पैसा होना चाहिए, आपके aspirations बढ़ेंगी, उसके साथ पैसा भी बढ़ेगा, तो investment planning बहुत जरूरी है. And like you said कि beyond yourself also, आप समाज के बारे में भी सोच सकते हैं, उसके लिए भी पैसा जरूरी होता है. So thank you. खर्चे बढ़ाओ आप, अपनी इनकम बढ़ जाएगी. खर्चे बढ़ाओ, इनकम बढ़ जाती है. अच्छा, खर्चे बढ़ाओ. अरे, I like the sound of that. पहली चीज बहुत गलत है. उतना ही पैर पसारो जितना अपना ये है, बिल्कुल नहीं. तो आप खर्चे बढ़ाइए. So I was going to wind up, but one of our listeners or viewers has just sent in a question which I'll ask you because I think you would like to answer this. He's asked me, how would you define success? Okay. Question comes, whoever is the person. Mr. Kushal is asking this question. Mr. Kushal, good evening. I like your question. My question to you will be, is depend on what is your definition of success. My definition of success is absolutely different than Deepika's, or than Mr. Shah Rukh Khan, or Mr. Amitabh Bachchan, or could be your father's. Your father, I'll give you my own example. Let's say, when I was working in multinational company, my father visited, and how it happens in multinational companies. You get big swanky office to yourself, and my dad walked in and he said, "Wow, wow, what a office you got, buddy, and it's nice, and I'm proud of you." So for him, that was my success, right? And believe me, for whatever reason, within a month, I left the job. Because for me, that was not the success. That was not the only success. I was looking for something else also. All right. Financial success, absolutely, right? There could be a difference. What you try, what one should try and do is that make sure whatever you are born with, at least you're taking it to one higher level. Just try and take that to one higher level. I'll put it in a simple language. When you realize, Sunil, एक सेकंड, थोड़ा हम हिंदी में अगर बात करें तो because a lot of our viewers want to. Sorry, go ahead. No problem. अगर आपको पता है, आप सक्सेस का डेफिनेशन मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सक्सेस का डेफिनेशन आपके ऊपर होता है. व्हाट आपको जो सक्सेस लगता है वो सक्सेस होता है. मेरे पिताजी ने एक बारी when I was working in multinational company, when he walked in and जब उन्होंने देखा कि क्या wow, what a office, 2000 square feet का सिर्फ मेरा केबिन ही था, एंड तो उनके लिए तो ये मैं बहुत सक्सेसफुल बेटा बन गया था. और 1 महीने में मैंने छोड़ दी जॉब, बिकॉज मेरा सक्सेस का डेफिनेशन कुछ अलग था. लेमैन की लैंग्वेज में बात करने के लिए, आई हैव टू से, व्हेनेवर यू रियलाइज, जब आपको पता चल जाता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं ये 1 BHK है,
what you should try and do is that at least take it from 1 BHK to 2 BHK. एक स्टेप ऊपर लेके जाइए अपने आप को लाइफ में. If your let's say कि आपके पास, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक छोटी कार है, आपसे भी ये देखने की कोशिश कीजिए एक अच्छी बेहतर फीचर्स वाली, बेहतर बेनिफिट्स वाली एक कार हो. तो जब आप अपने आप को थोड़ा और आगे लेके जाते हो, बिलीव मी यू फील सक्सेसफुल, क्योंकि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. जरूरी नहीं होता है कि मेरा दोस्त अगर यहां से जॉब छोड़ के उसको 5 लाख का इंक्रीमेंट मिल गया या 10 लाख का मिल गया तो वो सक्सेसफुल है और मैं नहीं. इट डजंट हैपन दैट वे. वी ऑल हैव आवर ओन स्टोरीज, बिलीव मी, नोबडी नोज बिसाइड्स यू. उसका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग ही रहेगा, आपका रास्ता अलग है. तो सक्सेस का डेफिनेशन आप डिसाइड कीजिए कि इसका मतलब सक्सेस है. वन मोर थिंग, अपनी डेफिनेशन में अटके नहीं पड़े रहिए. डोंट गेट चेंज्ड अप टू योर ओन डेफिनेशन, वेदर समथिंग इज बीइंग अ रिच और समथिंग बीइंग अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास. नहीं, ये कुछ नहीं होता है. ये सब हमारे दिमाग में ही होता है. अदरवाइज बिलीव मी, आप सारे खर्चे कीजिए और कुछ नहीं बढ़ाइए. अगर हो सके तो 10,000 ही आप अगर हर महीने डालिए, 20 साल में आप डेफिनेट करोड़पति बन रहे हो. तो ये अपने खुद की लाइफ टाइम में अगर 20 साल में, जस्ट टेल मी, नाउअडेज बहुत से लोग 20, 22, 21 में तो काम करते ही है ना, शुरू तो करते ही है. बिल्कुल. उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर भी नहीं होता है कि फैमिली में, घर में पैसे दो. अगर किसी के घर में वैसी ये नहीं रहेगी, डाल दो 10,000 रुपया. एट द एज ऑफ 40 इफ यू आर करोड़पति, व्हाट एल्स डू यू वांट? What else do you want? Yes. तो आप डिसाइड कीजिए तब कब रिटायर होना है, रिटायर होना है कि नहीं. बिलीव मी, आई हैव सो मेनी पीपल हु कम्स टू मी, रिटायरमेंट क्या होता है. एंड द लास्ट नोट, इफ देयर आर नो अदर क्वेश्चन, आई लाइक टू से शेयर मार्केट जिस तरह से है ना, उस तरह से बनने की कोशिश कीजिए. What I mean, share market does not discriminate. It doesn't discriminate आपके बाल लाल काले पीले हैं क्या आपके बाल नॉर्मल है. It doesn't discriminate your male or female. It doesn't discriminate your rich or poor. It doesn't discriminate your young or old. It doesn't discriminate your educated, not educated. अगर शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हो, सबको सेम रिटर्न्स मिलता है. यू गेट द सेम रिटर्न्स, एवरीबॉडी. शेयर मार्केट को पता होता है क्या कि नहीं, तो ये दीपिका ने डाला हुआ है, शी इज ऑलरेडी रिच, व्हाई डू आई नीड टू गिव हर मोर रिटर्न. नो, करेक्ट. सुनील ने डाला, वो तो फाइनेंशियल प्लानर, उसको क्या जरूरत है. नहीं, सबको उतना ही देता है, वो रोज देता है. आपको पता होना चाहिए कितना डालना है, कितना नहीं डालना है. थोड़ा सा आप अपने पास रखिए जरूर. Don't put everything in the investment I'm talking about. Keep something for unexpected expenses also. मतलब आज घर में आपने टिंग टोंग बेल बज गई, घर में कोई आया, ओ दूर का मामा, दूर का कोई रिलेटिव, दूर का कोई फ्रेंड आ गया, पॉप्ड अप, एंड देयर आर एक्सपेंसेस. आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये एक्सपेंसेस तो मैंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं लिया था. राइट. और सडनली एक्सीडेंट हो गया. भाई, आपकी हेल्थ पॉलिसी का वहाँ आने के लिए तो टाइम लगेगा. पहले जाके रिक्शा से जाओगे, कार से जाओगे, ओला उबेर करोगे, ये सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस रहेंगे. कीप सम मनी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. किसी का बर्थडे, अचानक आपको फोन आ गया, अरे उस दोस्त का फोन है, बर्थडे है, चलो जाते हैं. आप बोल सकते हो क्या, यार गिफ्ट में 1,000 रुपीज का तो कुछ तो देना पड़ेगा, ये एक्सपेंसेस मैंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं लिया था. लाइफ डजंट हैपन दैट वे. Financial planning is just one word. You yourself can decide how to manage. What I tried doing from this usual notional जो लोगों के दिमाग में financial planning होती है, वो मैंने बात ही नहीं करी इसमें. What I can see that. Yes, what I try doing it for you is give you the different meaning to financial plan. Insurance से लेके will writing. Don't forget these 2 points. Financial planning में ये जरूर आता है. आपकी विल, दूसरा, इन केस यू डोंट नो,
I'm sorry, Deepika, मैं थोड़ा और टाइम ले रहा नहीं हूँ. नहीं, please But go ahead because we also have a few questions. So आप करिए फिर मैं. बिल आप नॉर्मल प्लेन पेपर पे, घर में कोई भी एक ब्लैंक पेपर हो उसके ऊपर भी कर सकते हो. नॉट नेसेसरी द विल नीड टू बी रजिस्टर्ड ओनली. ध्यान में रखिए, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी एक एसेट क्रिएट किया है, एनी एसेट, मतलब मैं बोल रहा हूं आपके बैंक अकाउंट में सैलरी का 20-30 हजार भी पड़ा है, आपको कुछ हो गया, बैंक विल नॉट गिव दैट मनी टू द नॉमिनी. मैं और एक फंडा आपके दिमाग से क्लियर करना चाहता हूं. नॉमिनी इज नॉट द बेनिफिशियरी. जस्ट बिकॉज आपने किसी को नॉमिनी बनाया, जरूरी नहीं वो पैसा उसी को मिलेगा. नॉमिनी इज समबडी who's supposed to take care of that money and make sure कि वो पैसा उस बेनिफिशियरी को मिल जाए. मतलब Okay. दीपिका अस्थाना का नॉमिनी सुनील बन सकता है. सुनील ने क्या करना है, दीपिका के बाद आई हैव टू मेक श्योर ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके, लीगल फॉर्मेलिटी में हेल्प करके, उसका जो भी होगा घर का व्यक्ति, जो दीपिका ने मुझे बताया होगा, उसको देना. ये काम होता है नॉमिनी का. नॉमिनी इज नॉट द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. इसका मतलब ये हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है, एंड इफ यू थिंक द नॉमिनी विल गेट, बैंक कैन से नो, प्रूव दैट यू आर द बेनिफिशियरी. ये कौन कर सकता है? आपकी विल कर सकती है. आपके विल में अगर आपने लिखा हुआ है कि मेरे बैंक सो एंड सो बैंक अकाउंट में पैसा इतना इतना पड़ा है, दैट शुड गो टू माय वाइफ, शी विल गेट इट हैसल फ्री. क्या आपको अच्छा लगेगा? आपने इतने एसेट क्रिएट किए और उस एसेट्स को पाने के लिए आपका जो भी बेनिफिशियरी, आपकी बीवी हो, बच्चे हो, उनको झगड़ा करना पड़ रहा है. देयर आर सो मेनी कोर्ट केसेस आर देयर बिकॉज द विल वाज नॉट रिटन. There are so many cases are there because will is not clear. एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज दीपिका, उसके फैमिली मेंबर से दीपिका को कोई एसेट मिल गया. What if tomorrow some other lady pops up and she say, I am also Deepika Asthana? Correct. Deepika will have to go through so many things to prove that she is the right Deepika. Yes or no? Right. Right. So when person is making the will, and I'm talking about simple plain paper, वो रजिस्टर की मैं बाद में बात करता हूँ. प्लेन पेपर पे आप ये लिखिए, माई सो एंड सो प्रॉपर्टी, या मेरा ये फ्लैट, जो फ्लैट नंबर सो एंड सो, उसका पूरा एड्रेस लिख दीजिए. लिखिए आई एम 100% आई एम गिविंग इट टू दीपिका, हुज आधार नंबर इज सो एंड सो, हुज पैन नंबर इज सो एंड सो. दीपिका अस्थाना दो हो सकती है, सेम आधार कार्ड सेम पैन कार्ड नहीं हो सकता. इट्स अ यूनिक राइट. आधार कार्ड पे आपका थंब इंप्रेशन भी होता है. सो व्हाट यू डूइंग, यू आर मेकिंग श्योर कि जिस किसी को भी आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट देना चाहते हो, वो उसी को जाएगा. कोई और थर्ड गलत आदमी उसका फायदा नहीं उठाएगा. Very interesting. नाउ लेट्स कम टू द रजिस्टर्ड विल. रजिस्टर्ड विल में क्या करना होता है? बस वो 2000 रुपए का जाके 500 रुपए के उसके ऊपर बनाना होता है, कोर्ट में जाके नोटराइज का ठप्पा हो गया, सो रजिस्टर्ड. अब नॉर्मल विल जो हाथ से लिखी हुई है और रजिस्टर्ड विल में फर्क क्या है? नॉर्मल विल तो आप रोज बदल सकते हो. कोरे कागज पे लिखी हुई है, आप रोज बदल के, रोज लॉकर में रखिए, दूसरे दिन निकाल के, अच्छा इस बेटे के साथ झगड़ा हो गया, चलो उसका नाम निकाल दो, आप कर सकते हो. रजिस्टर्ड विल को अगर आपने चेंज करना है तो वापस जाके वो खर्चा करना है. करेक्ट. 2000 का जो भी खर्चा होगा कोर्ट का, दैट्स इट. दूसरा, मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा, कोई भी आज की तारीख में, वेदर यू दीपिका डोंट थिंक यू आर टू यंग, मैं विल क्या बनाऊं, मैं ये क्या उम्र है, नहीं. आप जाइए और जब भी ये नॉर्मल पेपर में भी बनाइए, एक अपने डॉक्टर को अगर हो सके तो उसको विटनेस बनाइए. There are so many cases are already there in India which are pending because doctor is saying now कि जब इस व्यक्ति ने will बनाई थी, his mind was not in a right condition. तो अगर डॉक्टर ही आपका विटनेस बनता है तो बात ही खत्म हो गई. खैर, डॉक्टर विटनेस नहीं बन रहा है, आप उससे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि सो एंड सो डेट दिस पर्सन वाज इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड. खत्म हो गया. दीजिए 500 रुपया डॉक्टर को अगर मांग ही रहा है तो. बट डॉक्टर विल आस्क यू दैट टाइम सम क्वेश्चन, ही विल मेक श्योर दैट यू आर राइट स्टेट ऑफ माइंड. बनाइए.
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स में डाला है, विल बना है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट एज अ फाइनेंशियल प्लानर, आप अपने फैमिली को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने जिस किसी को अपना समझते हैं उसको आके रखिए कि भाई मैंने ये किया हुआ है, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाए। जो Interesting. LIC क्या इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स के साथ हो रहा है, कोई क्लेम करने के लिए नहीं आ रहा है, वो वहां पे पड़ा है। पता ही नहीं। Perfect, perfect. Very informative, Sunil. मतलब especially that thing you mentioned about the nominee not being the beneficiary. Like honestly, यस मुझे भी यस नहीं पता यस थी ये यस बात. यस यस So यस। that's एक अलग very. से सेशन ले लेंगे उसके ऊपर, मे बी इन केस I इन think yeah, फ्यूचर। definitely. आपके पास you are so much of information and uh, a lot of points you're addressing जो you know बहुत जरूरी होते But हैं believe जिनको me, दिमाग में but नहीं believe आते. me, this is all related to financial planning. आप Yeah, सरप्राइज होंगे, वही. people ignore this So major and important definitely things. आपके Are there साथ any एक बार. questions related to? Are So there any there is, questions? I think, so Mr. Kushal actually just wanted to sum up what you mentioned to him, and I think whatever you said definitely struck home. So he said that when he asked about success के बारे में उन्होंने पूछा था, and he's saying कि basically what you're trying to say is that there is no end for success. You need to keep growing, aim higher every day, and keep reinvesting. So keep in mind keep in mind earning money is not the only criteria for your success. प्लीज correct. इसमें से थोड़ा सा बाहर आना सबके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी पैसा होता तो है. आता ही रहेगा, यू डिसाइड हाउ यू वांट टू अर्न, इट विल कम। मेक श्योर इट्स अ लीगल वे, नहीं तो पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। तो वी विल Correct. ऑलवेज से लीगल वे से कमाइए, हाँ जी उतना ही बिल्कुल. कमाइए जिससे आपको रात की नींद अच्छी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल. You need to give time to yourself, to your family, then only you'll enjoy. Otherwise, what's the use of that financial planning where everything is so haywire? और मुझे किसी प्लानर ने बताया मुझे 1 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ की जरूरत है, 4 करोड़ बस की जरूरत है, और आपने अपनी नींद ही गवा कर बिल्कुल. गवाई। राइट. It is not making sense at all. Indeed, indeed. Perfect, Sunil. Thank you. I think we don't have any more questions right now. But viewers के लिए, I just want to tell you कि अगर आपके पास और questions है, you can obviously get in touch with Mr. Sunil directly, or you can write into the 5paisa platform, and we'll be more than happy to address any or all of your queries. And क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया conversation रहा है, I think we'll definitely have to do this again sometime in the very near future. So thank you so much, Sunil, for giving us your time, for sharing such very nuanced tidbits with us about financial planning. And thank you, viewers, as always, for tuning in. Hope everyone has a lovely weekend. Thank you so much for having me. Take care, Deepika. Thank you. You all Bye. also take care. Bye bye.